सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चैप्टर 2 आपने कर लिया होगा, चैप्टर 1 आपका पहले हो चुका था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 से, दैट इज टर्मिनोलॉजीज इन इक्विटी एंड द डेट मार्केट्स। सो बेसिकली यहाँ पे मतलब आपको कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए। मैं आपके साथ फास्ट रीड करता रहूँगा, आपको जो टर्मिनोलॉजीज है और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो मैं आपके साथ कवर करता रहूँगा। लेट्स बिगिन चैप्टर 3 NISM Research Analyst exam. Now, security markets enable the investors to deploy their surplus funds in investment instruments that are predefined for the features issued under regulatory supervision and in most cases liquid in case of the secondary markets. There are two broad types of securities that are issued by the seekers of the capital from investors, like equity and the debt. When a business needs capital to fund its operation and expansion, it makes a choice between two types of securities. Obviously, किसी भी बिजनेस को अगर कभी पैसा चाहिए होगा, या तो वो इक्विटी के थ्रू पैसा लेगा या डेट के थ्रू लेगा, राइट। इतना बेसिक क्लियर है, बहुत ही बेसिक है अभी तक। इक्विटी कैपिटल इज अवेलेबल फॉर द कंपनी टू यूज एज लॉन्ग एज इट इज नीडेड, बट जो डेट कैपिटल होगा दैट विल हैव टू बी रिटर्न आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम। इक्विटी इन्वेस्टर्स डू नॉट एंजॉय एनी फिक्स्ड रिटर्न्स और द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, बट द डेट इन्वेस्टर्स विल अर्न अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली कि अगर कभी इक्विटी शेयर होल्डर बन के शेयर खरीदोगे, कंपनी आपको कभी भी फिक्स ये नहीं बोलेगा कि चलो आज से 4 साल बाद आपको पैसा लौटा देंगे और हर महीने या हर 6 मंथ्स में या हर पर एनम आपको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स देंगे। वो सिर्फ डेट में पॉसिबल है अगर आप लोन लेते हो तो, राइट। सो द डेट इन्वेस्टर्स आर द लेंडर्स टू द बिजनेस, इक्विटी इन्वेस्टर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। इक्विटी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, डेट इन्वेस्टर्स डू नॉट। Residual profits of the business belong to the equity investors. Debt investors' claim is restricted to the periodic fixed coupons and the principal remain on the maturity. Due to these fundamental differences in equity and the debt securities, these are seen as the two distinct asset classes between which the investors make a choice. Equity represents a risky, long-term, growth-oriented investments that can show a high volatility in performance depending on how the underlying business is performing. There is no assurance of return to the equity investors since the value of the investment is bound to fluctuate. Debt represents a relatively lower risk, steady income-oriented investments. It generates a steady rate of return provided that the business remains profitable and does not default on its repayments, defaults on its payments. Since all the residual benefits of deploying capital in a profitable business go to the equity investor, the return of equity investors is likely to be higher than that of the debt investors. For example, if a business borrows funds at 12% and is able to generate a return of 14% on the asset created by such borrowing, that the debt investors receives only 12% as promised, but the excess of the 2% earned by the assets benefit the equity investors. The downside also hurts the equity investors who may not earn anything if the return is lower than the borrowing cost and if the business is failing. Now, choosing between the equity and a debt is a trade-off. Investors desiring a lower risk and willing to accept a lower stable return choose the debt. Obviously, अगर आपको ज़्यादा ये नहीं है कि मेरे को इक्विटी से बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेंट रिटर्न्स चाहिए, सो आप डेट के साथ सेटल हो सकते हो, जहाँ पे आपको आपका जो लेंडर है बेसिकली वो कंपनी को जब पैसा देता है तो कंपनी उसको फिक्स बोल देगी कि हम आपको 8 to 10% के इंटरेस्ट पे ये पैसा उधार लेते हैं। लेकिन ये अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, आपने आज अगर शेयर 100 पे लिया होगा, आपको नहीं पता 6 महीने बाद वो 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो चूजिंग बिटवीन द इक्विटी एंड डेट इज अ ट्रेड ऑफ। Investors desiring low risk and willing to accept a lower stable choose debt if you are seeking high return and you may not be able to take without the additional risk of the equity investments. Now, most of the investors tend to allocate the capital between the two choices depending on the expected return, their investing time period, the risk appetite and their needs. Now, basically terminologies equity market में क्या क्या यूज होती है। फेस वैल्यू, देखो ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर बड़ा बड़ा पैराग्राफ्स दिया हुआ है, लेकिन ये फेस वैल्यू क्या होता है। बेसिकली जब भी कोई नॉमिनल प्राइस जो बोलते हैं शेयर का, वो फेस वैल्यू है। जब भी कंपनी इशू करती है शेयर, तो भले उसकी मार्केट में वो लोग डिटरमाइन करेंगे प्राइस आईपीओ के टाइम, वो भले 600 हो, 800 हो, 200 हो, 100 हो, बट जब भी ये इशू करते हैं तो फेस वैल्यू उसकी या तो 2 रुपीज़ होती है, 5 रुपीज़ होती है, 10 रुपीज़ होती है। तो वो उस फेस वैल्यू पे अपने आप को एक तरह से वो लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है फेस वैल्यू 10 की, तो जो इक्विटी कैपिटल होगा उसका वो 10 लाख होगा, राइट। सो यहाँ पे देयर इज नथिंग मोर टू टॉक अबाउट, बट एक चीज है यहाँ पे कि जब डिविडेंड्स डिक्लेयर होते हैं, dividends are always declared as a percentage on the face value. So when we say a dividend of 30% has been declared and face value is 10, 3 rupee ka dividend. Now, book value. Now, what is the book value? Book value of a company is a net worth of the company. Basically, net worth of the company को जब आप number of shares से divide कर दोगे तो आपको book value per share मिल जाएगी, बराबर। It's a theoretical amount of money each shareholder would get in case of the company has to wind up. Now, on the left hand side of the balance sheet, there are primarily two things: share capital, debt. The assets of the company is in the balance sheet as its book value, that is the cost less the depreciation. तो जब भी ये assets होते हैं, ये book value पे measure होते हैं, right? Now, the realizable value of these assets may be different from the book value and is never known. If it is assumed that each asset on the balance sheet date may be converted into cash at its book value, मतलब हम यही मान के चलते हैं कि बुक वैल्यू पे आपने एसेट 100 रुपीज़ पे दिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपको अगर आप उसको बेचने जाओ तो शायद 120 भी मिल सकता है, 80 भी मिल सकता है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि उसको 100 ही मिलेगा, जो ये आपका रियलाइजेबल वैल्यू है, आपका बुक वैल्यू है।
राइट। तो जब भी उसको हम लोग ने कैश में कन्वर्ट कर दिया और आप उसकी सारी लाइबिलिटीज चुका दो सारी तरह से, ठीक है, एंड कैश इक्विवेलेंट टू द नेट वर्थ दैट इज इक्विटी प्लस रिजर्व्स वुड बी लेफ्ट टू द शेयर होल्डर्स। आपने सारे एसेट्स बेच दिए, जितना पैसा आया उससे आपने अपना डेट चुका दिया, जो भी पैसा बचता है उसके बाद में दैट इज फॉर योर शेयर होल्डर्स। But natural, the ability of the company to meet its liability would depend upon the realizable value of the assets. तो बेसिकली ये सारी चीज़ होने के बाद में जो पैसा बचता है ये जब आप डिवाइड कर दोगे शेयर होल्डर से तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगी। व्हाट इज अ मार्केट वैल्यू? ऑब्वियसली जो एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है वो प्राइस उसका मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी जो भी शेयर होता है डिपेंड्स ऑन द लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, सेंटीमेंट्स क्या है मार्केट में, लिक्विडिटी, रिप्लेसमेंट वैल्यू। दिस रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ अ कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, right? If a new company were to set up with the infrastructure plants which an already existing company has, then the cost which it has to bear today is the replacement value. पूरी की पूरी कंपनी नहीं लगानी हो तो उसमें कितना पैसा लगता है, रिप्लेसमेंट वैल्यू ना, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टच कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, अब ये प्लीज एक्सप्लेन अच्छे से सुनना। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फ्रॉम एन एसेट। और फिर ने क्या डिफाइन किया है, इफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द कैश दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग इट्स रिमेनिंग लाइफ, मतलब बिजनेस आपको आने वाले सालों में क्या क्या पैसा देने वाला है उसको अगर हम डिस्काउंट करके आज उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाएं वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इज अबाउट एस्टिमेटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड पेइंग अ प्राइस टुडे टू अर्न द फ्यूचर वैल्यू, राइट। नाउ मार्केट वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑब्वियसली यहाँ दोनों में जगह पे एक मिस प्राइसिंग होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, मार्केट वैल्यू बहुत सारी चीजों की वजह से डिटरमाइन हो सकते हैं, जैसे कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स है, लोगों का क्या नजरिया है उस शेयर की तरफ, तो हमेशा एक मिस प्राइसिंग होती है। और जो भी एनालिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमेशा इस मिस प्राइसिंग के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हो, लिटरली कैलकुलेट करते हो। मार्केट वैल्यू जरूरी नहीं है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू से मैच हो, राइट, क्योंकि कभी कोई बड़ी न्यूज आ गई, नेस्ले के केस में अगर आपको याद होगा मैगी बैन हो गई तो वो टाइम पे उनके शेयर्स गिर गए, लेकिन अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ से उसको मॉडल करके देखोगे तो शायद उसकी वैल्यू इतनी नहीं गिरनी चाहिए थी। तब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने शायद वो शेयर्स तभी खरीदे होंगे एंड टुडे नेस्ले इज बैक, and it's increasing. तो इक्विटी इन्वेस्टिंग में therefore there are two distinct notions of value and price. That is, intrinsic value is the estimated value per equity share based on the future earning potential of a company. Market price is the price at which the shares trade in the stock market. Taking into account the several factors, ठीक है ना, estimates of the intrinsic value may be equal to the less than or to the market price anytime. If the intrinsic value is perceived to be more than the market value, अगर intrinsic value जो मतलब आपने कैलकुलेट किया है अगर वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो the scrip is said to be undervalued. If intrinsic value is perceived to be less than the market value, मतलब मार्केट में अगर 100 रुपए का है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू तो सिर्फ 30 रुपीज की थी, तो द स्क्रिप इज सेड टू बी ओवर वैल्यूड, मत खरीदो, राइट। तो इस तरह से आप अपना डिसीजन लोगे। नाउ व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन? वेरी सिंपल, मार्केट कैप का मतलब आपके जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है आज मार्केट में, बेसिकली समझो कि कंपनी के 1 लाख शेयर्स है और अगर वो शेयर्स 20 रुपीज में मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, से BSE NSE के कोई भी एक्सचेंज पे, सो उसका मार्केट कैप क्या होगा? तो 1 लाख शेयर्स इंटू 20, दैट इज 20 लाख, तो उसका मार्केट कैप हो जाएगा। तो जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको कभी कभी उनको कैटेगराइज किया जाता है, जैसे ब्लू चिप स्टॉक होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, तो इनको इस तरह से डिवाइड किया गया। कोई ऐसे स्पेसिफिक लिमिट्स नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कॉमनली उनको बोला जाता है कि जैसे कि जो टॉप 50 to 100 हैं उनको लार्ज कैप बोल दिया है, उसके बाद में जो 200 to 500 उनको मिड कैप बोला और बाकी सारे के सारे स्मॉल कैप है, right? Now the market cap is used as an indicator of the size of the importance of the stock market. The ratio of the market cap to the GDP is a relevant measure for the purpose. ठीक है, right? Now what is the enterprise value? ये थोड़ा एक थोड़ा अच्छा concept है. Enterprise value is the theoretical takeover price of a firm. Along with equity, it considers the debt as well as the cash reserves of the company in determining its value. It is implicitly assumed that the debt of the company is a liability that also has to be taken over and accounted for in the price of the acquirer, while the cash reserves are available to the buyer and therefore the deducted from the total value. बेसिकली आप इसका फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, आपको और इजीली समझ में आएगा। नाउ व्हाट इज एंटरप्राइज वैल्यू? मतलब अगर पूरा का पूरा फर्म खरीदना हो उसको मैं किस प्राइस पे खरीदूं, तो पहले क्या देखा जाएगा? उसका मार्केट कैप, मतलब इक्विटी का मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट उसमें ऐड कर दीजिए। मतलब आपको बेसिकली जब आप कंपनी खरीदोगे तो आपको उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पैसा भरना पड़ेगा और उसके जो डेट होल्डर्स हैं उनको भी पैसा भरना पड़ेगा एट द मार्केट वैल्यू, बराबर। ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको दोनों पार्ट। लेकिन जब आप कंपनी खरीदोगे तो मतलब आप उनको पैसा दोगे ये दोनों लोगों को, और कंपनी खरीदते टाइम आपको कंपनी का खुद का कैश भी मिलेगा। सो हम कैश को यहाँ से निकाल देते हैं, बिकॉज पहले आप दो फिर लो, इट डजंट मेक सेंस। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लेस द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंस।
Now, the market capitalization is arrived at by simply multiplying the market price with the number of outstanding equity shares. The market capitalization is arrived at by simply multiplying the market price with the number of outstanding equity shares. Market value of the debt is generally taken as outstanding debt on the balance sheet of the company. This cost is reduced by any cash or cash equivalents on the balance sheet, as that will be available to pay out the debts of the business. This is the price to the entire firm, to the buyer. Now, example, market cap is equals to the 20 lakhs. Total debt is equals to 3 lakhs. Cash will be equal to 4 lakhs. Then enterprise value to market cap 20, total debt 23 minus cash 4 lakhs, that is equals to 19 lakhs. Right? Now, what are these earnings? Historical, trailing and forward. Earnings are the profits in a business. Earnings can be defined at various levels. For example, net profits are the profits available to the equity owners. Earning before interest and tax, EBIT, are available to the both equity and the debt holders. Earning before depreciation, interest, tax and EBITDA. Earning before depreciation, interest, taxes and the amortization is earning available to the business to replace its assets for a period of time and to serve both equity and the debt holders. Earning of previous years are called as the historical earnings. Trailing earning refers to the earnings for the last 4 quarters calculated on a rolling basis. Earnings computed based on the future projections are called as the forward earnings. So basically, these are the different types of the earnings that are defined. EBIT, EBITDA. So basically, whatever is the past earning, you can call it as to be the trailing earnings, and they're calculated on a rolling basis. And the earnings which are projected for the future is known as the forward earnings. Now, what is the earning per share? When the net profits of a company belong to the shareholders, that is obvious. Earning per share is the net profit divided by the number of shares. So for example, अगर net profit 10 लाख है and shares outstanding 2 लाख हैं, तो NPS हो जाएगा ₹5, 10 lakh by 2 lakh. हायर NPS होगा, मतलब हायर प्रॉफिटेबिलिटी है, बेटर अर्निंग्स है शेयर होल्डर्स के लिए, एंड हमेशा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा टू कंपनीज जिसके कंपनी के कम EPS है. Now, what is the dividend per share? Similarly, total dividend amount जितना आपने डिक्लेयर किया होगा उसको बोल दिया जाता है डिविडेंड पर शेयर. अगर 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा कंपनी ने, मतलब ₹4 का डिविडेंड होना ₹10 का शेयर, तो दिस इज द डिविडेंड पर शेयर. नाउ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिंपली मार्केट प्राइस अपॉन द अर्निंग्स पर शेयर. तो मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, मतलब हर एक शेयर समझो आपको ₹5 कमा के दे रहा है, तो कितना टाइम्स आप उसका पे करने को रेडी हो तो उसका मार्केट प्राइस वही हो जाता है. दैट इज द प्राइस दैट द मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर द अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी. नाउ द PE इज रिफर्ड टू एज अ मल्टीपल ऑफ पर रूपी अर्निंग. व्हेन इट रिफर्स टू द स्टॉक ट्रेडिंग एट PE मल्टीपल ऑफ 12, इट मीन्स दैट ट्रेडिंग एट 12 टाइम्स इट्स अर्निंग. जब भी हम बोलते हैं कि अगर किसी भी मार्केट प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर, मतलब PE रेशियो 12 है, मतलब अगर कंपनी पर शेयर पे ₹1 कमा रही है तो मार्केट वही शेयर खरीदने के लिए ₹12 देने तक तैयार है. The PE multiple based on historical earning is of the limited value. The prices will change dynamically. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने आज बोल दिया PE 12 है, आज ₹1 कमा रहे हैं तो उसका ₹12 हो, क्योंकि प्राइस तो चेंज होती रहेगी, राइट? तो इट्स वेरी डायनामिक. While the reported earning is updated every quarter. Therefore, prices tend to move even after the historical earning per share is known in anticipation of the future earning. Quite simple बात है. So now, all this is, just you can just read it apart. But the main crux जो था P का, वो मैंने आपको बता दिया है. एंड प्राइस टू सेल्स रेशियो सिमिलरली सेम थिंग है. जैसे हम लोग ने ऊपर देखा मार्केट प्राइस टू द अर्निंग पर शेयर, सिमिलरली यहाँ पे मार्केट प्राइस था और कितना सेल्स है पर शेयर. तो यहाँ पे देखा जाए, आप उसका फॉर्मूला देखेंगे P/S रेशियो होगा, तो करंट मार्केट प्राइस अपॉन द एनुअल नेट सेल पर शेयर. सिमिलरली मार्केट कैप मतलब टोटल अपॉन द एनुअल नेट सेल्स, टोटल बाय टोटल. आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये एग्जाम्पल देखोगे क्वाइट सिंपली आपको समझ में आ जाएगा. लो PS रेशियो में इंडिकेटेड अंडर वैल्यूड स्टॉक. सिंपल ना, क्योंकि आप मतलब एकदम आप ये समझ लीजिए कि आपके कंपनी में जो सेल्स हो रही है पर शेयर, उसके अगेंस्ट लोग पैसा दे ही नहीं रहे ज़्यादा प्राइस, राइट? तो अगर लो PS रेशियो है एंड इफ इट्स पेड विद द ट्रेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग सेल्स, देन इट्स एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. Now, again, if you see at another ratio, that is a price to book value ratio. Now, price to book value ratio is one of the most widely used ratios to find the price relative. The P/BV ratio or the measure of a company's current market price vis-a-vis its book value. Now, book value is calculated by dividing the net worth by the number of total shares. तो बेसिकली हमने पहले ये बुक वैल्यू ढूंढना सीखा था कि हम लोग कैसे सारे एसेट्स को अगर बुक वैल्यू पे लेंगे एंड देन हम लोग अगर सारा डेट चुका दें तो हमको उसका बुक वैल्यू मिलता है. तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. इक्विटी कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 50 लाख है, और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 6 लाख है.
करंट मार्केट प्राइस 20, तो बुक वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले आप उसको नेटवर्थ देखो। हमने क्या बात की थी, एसेट्स सारे अगर बुक वैल्यू पे बेचे हैं और डेट चुका देते हैं तो क्या बचता है? इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पे एसेट्स का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग ने क्या लिया है, इक्विटी रिजर्व और इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स, दैट इज 10 + 50 60 lakhs डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट इज 6 lakhs। देयरफॉर ₹10 आ गया हमारा बुक वैल्यू। मार्केट प्राइस कितना है? 20। देयरफॉर द P/BV इज 2x, राइट। अगर PBV लेस देन 1 होगा, मतलब कंपनी की बुक वैल्यू से भी कम पे उसकी मार्केट प्राइस है, तो स्टॉक इतना अंडरवैल्यूड हो जाएगा वो केस में, राइट ना। हमेशा ये पूछो लेकिन कि व्हाई इज द मार्केट प्राइस इज लेस देन द BV। ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है, बट देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर। PBV इज a यूजुअल मेजर टू वैल्यू स्टॉक इन द अर्निंग्स आर नेगेटिव, क्योंकि बहुत बार होता है कि प्रॉफिट्स नहीं होते हैं कंपनी में एट द वेरी स्टार्ट, देयरफॉर देयर अर्निंग्स आर नेगेटिव, तो अब उसमें कभी भी PE रेशियो नहीं यूज कर पाओगे, देयरफॉर PBV इज important. Now differential voting rights, that is a DVR. A DVR is just like a normal share of a company, except that it carries less than one voting right per share, like a common share. So for investors who wish to raise capital, मतलब मेरे को पैसा चाहिए बट मैं वो इन्वेस्टर्स को वोटिंग राइट नहीं देना चाहता हूँ, therefore this type of differential voting right shares are issued. Investors who wish to invest only for the dividends and the capital appreciations and are really not bothered about the voting rights find these shares attractive. The number of voting rights for the DVR differ from company to company. DVR typically trade as a separate category of instrument and are available at a discount to the common shares of a company. Obviously, अगर आप उसके voting rights छीन लो इन्वेस्टर के, तो आपको ये शेयर्स कम प्राइस पे देने पड़ेंगे, शेयर्स कम प्राइस पे you will have to issue. Therefore, the Companies Act 2013 defines the eligibility of a company to issue shares. This includes a dividend of at least 10% over the preceding 3 years, and such shares shall not exceed 25% of the total post-issue paid-up capital of the company. Basically, this includes a dividend of at least 10% over the preceding 3 years, and such shares shall not exceed 25% of the total post-issue paid-up capital. राइट, तो टाटा मोटर्स जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स देता है। तो ये जो इक्विटी का पार्ट है यहाँ पे खत्म होता है ना। बेसिकली द टर्मिनोलॉजी इज इन द डेट मार्केट। नाउ द डेट मार्केट, द डेट कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द लेंडर्स हु आर कीन टू बी कॉम्पेंसेटेड रेगुलरली इन द फॉर्म ऑफ प्री स्पेसिफाइड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली डेट मतलब जो भी देते हैं और उनको उनका एनुअली सेमी एनुअली उनको अपना इंटरेस्ट पेमेंट्स आता रहना चाहिए, राइट। दे ऑल्सो एक्सपेक्ट द मनी दे हैव लेंट टू बी रिटर्न्ड टू देम एट अ अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। डेट कैन बी क्रिएटेड बाय बोरिंग फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस और बाय इशूइंग द डेट सिक्योरिटीज। तो ये बहुत एक बेसिक चीज़ है कि डेट क्या है, डेट क्या नहीं है, उन लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इशूअर दैट इज अ कंपनी एंड द लेंडर जो इन्वेस्टर है, विच अलाउज द इशूअर टू बोरो अ सम ऑफ मनी एट अ प्री डिटरमाइंड टर्म. Now, basically, all the debt securities grant the investor the right to the coupon payments and the principal repayment as per the debt contract. Some debt securities called the secured debt also give the investors rights over the assets of the issuing company. If there is a default on the interest or the principal payments, these assets can be sold to repay to the investors. Investors with unsecured debt do not enjoy. मतलब जो सिक्योर्ड होंगे तो आप कंपनी के एसेट्स बेच सकते हो और आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो. Debt securities may be privately placed with a select group of investors or offered to the public through a public issue of the securities. Debt securities that are issued to the public are mandatorily listed on the exchange NSE BSE so that they can be traded in the secondary market. Unlisted securities have to be held until the maturity or traded in the over the counter markets. Now face value, सेम थिंग. कूपन रेट मतलब क्या? बेसिकली कूपन रेट इसकी क्या आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है. तो एग्जांपल आप ये देखिए कि जैसे 8.24 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर देखा जाए 2018 का, मतलब 82.40 एक कूपन उसको एवरी ईयर मिलने वाला है. बिकॉज उसका फेस वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं 1000 हो, क्योंकि जनरली 1000 होता है कोई भी डेट सिक्योरिटी का. मेच्योरिटी मतलब क्या? एक टेन्योर होता है, हमेशा उसको एक टेनर या मेच्योरिटी बोला जाता है, टर्म टू मेच्योरिटी बोला जाता है. मेच्योरिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स फॉर द बॉन्ड. द सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर कंप्लीट चेंज इन द बॉन्ड प्राइस एंड द मार्केट रिस्क इन द बॉन्ड इज लिंक टू इट. बेसिकली अगर आप समझो मैं बोलता हूँ कि मेरा मेच्योरिटी है 5 years, तो मतलब वो 5 साल तक आपको इंटरेस्ट देगा और 5th ईयर पे आपको पैसा वापस दे देगा. प्रिंसिपल बेसिकली दिस इज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग ऑफ द इशूअर रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्योरिटी. मतलब आप उसको जो दे रहे हो पैसा कंपनी को, वही आपका प्रिंसिपल अमाउंट है. दैट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच एन इन्वेस्टर मेक्स व्हेन द बॉन्ड इज इशूड एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फेस वैल्यू.
redemption of a bond मतलब when a bond matures then the investor redeems the bond मतलब समझो आपका 5 साल हो गए, that means the contract between the issuer and the investor is over. The issuer of the bond repays the principal and also makes the final coupon payment and then the bond ceases to exist or the bond matures. होल्डिंग पीरियड रिटर्न बेसिकली आपने आज लिया 10 दिन तक अगर कोई चीज़ होल्ड की 10 दिन में आपने कितना पैसा कमाया, दैट इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड व्हेन इट इज बॉट एंड हेल्ड बाय द इन्वेस्टर. एन इन्वेस्टर में परचेज द बॉन्ड फ्रॉम द इशूअर डायरेक्टली व्हेन इट इज इशूड और may purchase at any later date from the secondary market. The investors may hold the bond till maturity or may exit earlier between by selling the secondary market. The return to the investor for the period for which the bond was held is known as the HPR. बेसिकली एक एग्जाम्पल की तरह से देखोगे कि अगर इन्वेस्टर ने बॉन्ड परचेज किया 104 रुपये में 8 रुपये का कूपन लिया और उसको री इन्वेस्ट किया 60% पे 1 साल के लिए और फाइनली उसने 110 रुपये में बेच दिया, तो उसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना होगा? ये उसने 8 रुपये कमाया, 8 रुपये को 7% के हिसाब से और इन्वेस्ट किया, लास्ट में उसको 110 मिला 104 के अगेंस्ट. ये पूरे की पूरी इनकम को उसने डिवाइड कर दिया है शुरू के इन्वेस्टमेंट पे 104 रुपये पे 14% का रिटर्न उसको मिल गया. Now what is the current yield? Method is simple method of calculating the return on a debt security in which the coupon is divided with the current market price of the bond. Simply as that. बेसिकली अगर आपने कोई 104 रुपये में खरीदा है और आपको अगर कूपन मिलता है 8.24% का, तो आपको बेसिकली हम अज्यूम करेंगे कि अगर ये 104 पे ट्रेड हो रहा है मतलब उसके 100 रुपये की फेस वैल्यू होगी. 100 रुपये के फेस वैल्यू पे अगर आपको 8.24% का इंटरेस्ट मिला होगा तो 8.24 और उसकी करंट मार्केट प्राइस 104 डिवाइड बाई 104 तो आपको करंट मिल जाएगी. ना यील्ड टू मैच्योरिटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, किस तरह से कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. It's a more comprehensive and widely used measure of return calculation of the debt security than the current yield. Takes into consideration all future cash flows coming from the bond, coupon plus the principal repayment and equates the present value of these cash flows to the prevailing market price of the bond. तो बेसिकली ये सिर्फ ऐसा ही नहीं देखते कि कूपन अपॉन मार्केट प्राइस, ये होलिस्टिकली सारे कैश फ्लोज को कंसिडर करता है और इक्वेट कर देता है. सारे कैश फ्लोज को इक्वेट करता है मतलब उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको इक्वेट कर देता है आज के प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के, मतलब कि कितने में बॉन्ड मार्केट प्राइस पे कितने पे ट्रेड हो रहा है. द रेट विच इक्वेट्स द प्रेजेंट आउटफ्लो, बेसिकली जो आज अगर हमको खरीदना होगा वो बॉन्ड उसके लिए कितना पैसा देना है विद द प्रेजेंट वैल्यू द फ्यूचर इनफ्लोज, मतलब उसके जो भी कूपन और प्लस प्रिंसिपल आएंगे उसको YTM बोला जाता है, दैट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी. इसको आप IRR भी बोल सकते हो. बेसिकली इसको कैलकुलेट करना रहेगा तो ट्रायल एंड एरर मेथड से होता है. एंड जब आपको बेसिकली कैलकुलेट यूजिंग द XIRR फंक्शन इन दी एक्सेल. नाउ बेसिकली अगर बोलें कि HDFC 9.7% के 2017 बॉन्ड्स अगर 19 जुलाई को इशू किए गए हैं मैच्योरिंग विद एनुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूमिंग द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट 103, मतलब बेसिकली आज आपको 103 देना पड़ेगा नेगेटिव. आपको उसका जो कूपन आने वाला है वो 9.7% का आने वाला है और अगर हम लोग उसको 100 रुपये का फेस वैल्यू गिने तो 9.7 और लास्ट में उसका फुल प्रिंसिपल रीपेमेंट आ जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. जब आप XIRR फंक्शन में ये प्लॉट करोगे यू विल गेट दी YTM दैट इज द IRR दैट इज द 9.6%. नाउ YTM लो बेटर ऑल्सो वाइडली यूज्ड हैज इट ओन शॉर्टकमिंग क्या है? इट अज्यूम दैट इन्वेस्टर विल होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी, क्योंकि आप इसको प्लॉट ही ऐसे कर रहे हो कि आपको लगता है कि ये पूरा वो 19 जुलाई 2016 के बाद बेच भी सकता है, 19 जुलाई 2015 के बाद भी बेच सकता है, लेकिन हमने कैलकुलेशन में अज्यूम किया कि वो लास्ट तक उसको होल्ड करके रखेगा. वो सेकेंड एजम्पशन इसका यह आ जाता है कि जो कूपन मिलेंगे बीच में हमको वो भी वही रेट पे इन्वेस्ट होने वाले हैं 9.6% के हिसाब से. वो भी जरूरी नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कब चेंज होता रहता है. तो दिस अजम्पशन इम्प्लाइज दैट द इंटरेस्ट रेट्स वुड रिमेन द सेम फॉर द एंटायर टेनर एंड देन द रेट्स वुड बी सेम अक्रॉस द टेनर व्हिच मीन्स द यील्ड कर्व वुड बी स्टैटिक एंड फ्लैट. ये भी पॉसिबल नहीं है. तो ये थोड़े रीजंस है. नाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन? द ड्यूरेशन मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स. नाउ बॉन्ड्स विद द हायर ड्यूरेशन experience the greater increase in value when the interest rates decline and the greater loss in value when the rates increase compared to bonds with the lower duration. Duration is the weighted average maturity of the bond, where the present value of the future cash flows are used as the weight. Duration thus encompasses the tenor, coupon, yield in its calculation. Higher the time to maturity, higher the duration, higher the interest rate risk of the bond. Lower the coupon rate, higher the duration, higher the interest rate risk of the bond. Lower the yield, higher the duration, higher the interest rate risk of the bond. बेसिकली जितना आपका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क उतना ज़्यादा होने वाला है, राइट. तो ड्यूरेशन इज़ अ वेरी कन्वीनियंट इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजर. आप इतना समझ लो इसको बेसिक कि ड्यूरेशन एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क. अगर आपकी इंटरेस्ट कम हो गई, इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली आपका अगर ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, अगर आपका 10 साल का ड्यूरेशन आ रहा है, 15 साल का ड्यूरेशन आ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट के चेंजेस से आपका रिस्क बढ़ जाता है.
So that is the higher the duration, higher the sensitivity of the bond prices vis-a-vis the interest risk. The duration of the bond is not a static number but will change in the tenor and the yield of the bond. As the bond comes closer to maturity, its duration also decreases and makes the bond less riskier. Now, what is a modified duration? Modified duration का एक formula है जो formula को दिया गया है minus the duration upon 1 plus YTM. उसका क्या मतलब? Modified duration measures the impact of change in interest rates on the price of the bond, while duration gives the sensitivity of the bond price to the change in interest rate. Modified duration will give you the magnitude. Duration आपको sensitivity दे रहा था, right? यहाँ पे आपको magnitude मतलब कितने से change. Therefore, modified duration will be give you minus the duration upon 1 plus YTM. Right? So you can just read this, not very important, but हाँ modified duration of 4.3 अगर हमने बोल दिया है and small change of 0.25%, that is the 25 basis points or 25 bips, would mean that the price of the bond would change by 4.3 जो उसका modified duration हमको मिला है. और अगर हम लोग बोलते हैं कि चेंज आ रहा है कि 0.25% से, तो we'll not say कि 0.25% चेंज होगा. We'll say 4.3 into 0.25%, that is 1.075% in the opposite direction. Now, what is convexity? The impact of the change in interest rates on the bond prices is inverse, but not linear. This means when the rates go up, the bond price go down, but they don't fall as much as they would rise when rates go down by the same magnitude. Thus, rise in the bond price is more than its fall. For the same movement in interest rates is downward and upward directions respectively. तो basically जब rise होते हैं bond price वो ज़्यादा होते हैं than its fall. This unique property of the bond prices is known as convexity. It must be noted that the modified duration is applicable only for the small changes in the interest rates. Right? Now, modified duration is only useful at a point when the straight line would be tangential to the price yield curve. But the fund managers look for bonds with a high convexity, as these do not fall much in rising interest rate scenario but rise more when the rates are falling. Basically convexity का एक ही मीनिंग है. अब ये समझ लीजिए कि convexity ये बोलता है कि जब prices fall होते हैं तो वो fall कम होते हैं, लेकिन जब वो rise होते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं. Right? So bond fund managers will look for the bond with higher convexity, as these do not fall much in rising interest rates, लेकिन will rise more when the rates are falling. पहली रिलेशन इसमें क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर फॉल होंगे तो प्राइस बढ़ेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो प्राइस गिरेंगे. लेकिन कॉन्वेक्सिटी की मेजर से हम ये प्रूफ कर पाते हैं कि दे विल नॉट फॉल मच इन राइजिंग रेट. देयरफॉर हाई कॉन्वेक्सिटी होना ज़रूरी है. एक टेबल में इन्होंने एक तरह से दिया हुआ है कि सिचुएशन जहाँ पे बॉन्ड की 2 ईयर की मैच्योरिटी है और वो ट्रेडिंग कर रहा है 100 रुपीज़ पे. दिस विल हैपन व्हेन द कूपन एंड द YTM आर सेम, जैसे 8%, तो वो 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर सकता है. नाउ इफ़ यू इंक्रीज द YTM टू 9%, मतलब बेसिकली अगर आपने उसको YTM 9% कर दिया, दैन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल फॉल टू 98.21, मतलब fall of 1.79%, whereas if the YTM were to fall by the same magnitude, that is 1%, then the bond price rises by 1.83%. मतलब अगर YTM आपने जब 8 से 9 किया तो आपका प्राइस हुआ चेंज 1.79 से, लेकिन जब आपने उसको 8 से 7 किया तो आपका प्राइस बढ़ा 1.83 से. तो बेसिकली आपका प्राइस ज़्यादा बढ़ा एट अ गिवन फॉल ऑफ द YTM. ये चीज़ हमने ऊपर यहाँ पे प्रूफ की थी. थर्ड पार्ट इज द टाइप ऑफ द बॉन्ड्स. बेसिकली टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स का फर्स्ट पैराग्राफ को you start reading the first paragraph, the types of the bonds. As defined in the previous section, bonds are securities which represent a loan. For a loan to be completely defined, the loan amount, time for which the loan is taken, and the rate at which it must be taken must be known. These three are known as the principal, maturity, coupon, respectively, in bonds. Each of these features can be modified to construct various types of the bonds. Now, zero coupon bond. Bonds which do not pay coupon in their entire term are known as zero coupon bonds. Simply zeros. Such bonds are issued at a discount to their face values and are redeemed at par. Thus, the return to this bond is not in the form of a periodic payment or interest, but in the form of difference between the issue price and the redemption value. बराबर. जीरो कूपन बॉन्ड का एक सिंपल मीनिंग है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट कभी नहीं देंगे.
दे विल नॉट गिव यू अ सिंगल इंटरेस्ट पेमेंट. आपको आज इशू कर देंगे डिस्काउंट पे और बोल देंगे कि 6 महीने बाद आप इसका फेस वैल्यू ले जाओ, राइट. तो सच बॉन्ड्स आर इशूड टू मैनेज ए कैश फ्लोज as there is no intermittent strain during the life of the bond to make periodic coupon payments. Cash remains within the company and can be used in the business with slightly longer term horizon. Repayment of the loan would be in one short bullet payment. T-bills issued by the government, commercial papers, certificate of deposit issued with banks, financial institutions, examples of the short-term zero coupon bonds. These papers are less than 1 year maturity and hence are also known as the money market instruments. ZBs, that is the zero coupon bonds of very long tenure, are issued at steep discount to the face values, are also known as the deep discount bonds. तो IDBI ने ये बहुत पहले एक बार इशू किया है. किसान विकास पात्र इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ द डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स. नाउ व्हाट इज द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स? ऑब्वियसली जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होती रहती है तो जब बॉन्ड इशू होते हैं तो उसको बोलते हैं कि आपको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड दिया जाएगा. उसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होगी वैसे वैसे हम आपको नए उस रेलेवेंट इंटरेस्ट रेट पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स करते रहेंगे, राइट. तो दीज बॉन्ड हुज कूपन इज नॉट फिक्स्ड एज इन केस ऑफ अ वेनिला बॉन्ड. वेनिला बॉन्ड में होता है फिक्स्ड बट इज रीसेट पीरियडिकली विद रेफरेंस टू अ डिफाइंड बेंचमार्क. दिस कुड बी द इन्फ्लेशन इंडेक्स और द इंटर बैंक रेट और द कॉल रेट और सम अदर रेलेवेंट रेट्स. ठीक है, ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना. इन सम केसेस देयर इज अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम लिमिट ऑफ द कूपन रेट्स इन द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एंड these limits are respectively to the cap and the floor, right. Similarly, now the convertible bonds, एक अच्छा interesting concept है कि what exactly is the convertible bonds? The convertible bond or the debenture is generally issued as a debt instrument with the option to investors to convert the amount invested into the equity of the issuer company later. The security has a feature of both debt and equity. The issuer specifies the details of the conversion at the time of making the issue itself. The date on which the conversion has to be made, the ratio, the price, and the proportion of the debentures that will be converted. These bonds will be converted either compulsorily or optionally. The bonds could be fully convertible, where the entire face value of the bond is converted in equity shares, or the partly converted, the part of the converted in a partly converted shares, the non-convertible portion continues to remain as the bonds. Obviously, now on conversion of the debt into equity, the debt is removed from the balance sheet and the equity capital is increased. This dilutes the EPS. Advantage of the issuer to the issuer of the convertible bond lies the fact that the convertible bonds usually have a lower coupon rate than the pure debt instruments. They have a lower coupon rate than the pure debt instruments. This is because the yield to the investor in such bond is not from the coupon alone, but also from the possibility of the capital appreciations in the investments once converted into equity. The issuer does not have to repay the debt on maturity since the shares are issued in the lieu of repayment. The disadvantage to this is that the stake of the existing shareholders get diluted when the fresh shares are issued on the conversion. As more shareholders come in, the proportion holding of the existing shareholders fall. Now, amortization bonds. The bonds usually pay interest during the tenure and the principal is repaid as a bullet repayment upon the maturity. However, there is a type of the bond known as the amortization bonds, in which each payment carries the interest and some portion of the principal as well. Housing loan, auto loan, consumer loan are all examples of these type of bonds, in which every month the borrower pays the same amount, that is the EMI, but each month the composition of the EMI is different, where initially interest forms the larger part and बाद में the principal forms the larger part. Now suppose एक investor suppose a person who has taken a loan of 100 at 12% for a period of 12 months, the EMI would be rupees 8.8. However, in the first month the interest component would be 1. क्यों? क्योंकि principal component 7.88 होगा. While in the last month the interest would be only 0.09, whereas the principal would have been increased to 8.80. This is why it makes sense to prepay the home loans in the earlier stages and not in the later stages. अब ऑब्वियसली आपने अगर लोन लिया होगा 100 का, पहले आपका जो इंटरेस्ट होगा वो 1 का होगा और ये प्रिंसिपल 7.88 का होगा. यहाँ पे क्योंकि आप पूरे के पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट भर रहे हो, धीरे धीरे लेकिन आप जब प्रिंसिपल आपका रीपे होता रहता है तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है वो भी कम होता रहता है. नाउ द कॉलेबल बॉन्ड्स. नाउ कॉलेबल बॉन्ड्स अलाउ द इश्यूअर टू रिडीम द बॉन्ड्स प्रायर टू देयर ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट. इन अदर वर्ड्स, द बॉन्ड्स व्हिच हैव एम्बेडेड कॉल ऑप्शन इन देम आर नोन एज अ कॉलेबल. The feature poses a risk for the investor but benefit for the issuer. Now basically ये कॉलेबल बॉन्ड मतलब अगर कोई कंपनी ने बॉन्ड इशू किए हैं और उसका मन अगर हो गया कि उसको वो यार रिडीम करने हैं क्योंकि उसको लग रहा है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स के मूवमेंट उसके फेवर में नहीं होने वाले हैं तो वो रिडीम कर देगा. Now an embedded option, that is a call option, gives the issuer the right to call back the bond before maturity. When the interest rates fall, the issuer would be in position to raise the same amount of loan at a lower interest rate. अगर पहले उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10% में, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स फॉल होकर 5% पे आ रहे हैं, वो नया डेट 5% पे ले सकता है, तो पहले वाले 10% को कॉल कर देगा, उनको पैसा अपना वापस चुका देगा और वापस से नया फ्रेश उठा लेगा, राइट.
It is advantage to the issuer to redeem the existing high-cost bond before the maturity and replace it with a new low-cost bond. To compensate for the risk to the investors, callable bonds usually have a high coupon, and they are also valued not as per the YTM but as per the yield to call. Right? Now, investors in a callable, however, lose the opportunity to stay invested in a high coupon bond if the call option is exercised by the issuer. तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल SBI ने जो दिया ना. सिमिलरली एक कॉलेबल होता है, एक पुटेबल होता है. तो पुटेबल मतलब क्या, इन्वेस्टर के पास राइट है कि वो बिफोर मैच्योरिटी वापस का वापस कंपनी वाले को दे दें. दीज बॉन्ड्स हैव एम्बेडेड पुट ऑप्शन इन देम. The risk is on the issuer, as an investor can at any point of time give the bond back to the issuer and ask for its principal earlier than the maturity. Investors would exercise their right to put a bond back to when the interest rates start rising. They would simply ask for the money earlier than and invest in the higher rate. Now, payment of kind in bonds is PIK bond. These are the bonds in which the coupon is not paid in cash but by way of more bonds. Companies which have a cash flow problem issue such kind of securities, and hence by the nature these instruments are risky. Also, while temporary cash flow stress is avoided, parallelly more loan gets added in the balance sheet of the company which is already in trouble. Hence, this is typically for the high risk investors. Now, principal protected note that the PPN is a relatively complex debt product which aims at providing a protection to the principal amount invested by the investors if the investment is held to maturity. Typically, a portion of the amount is invested in a debt in such a way that it matures to the principal amount on the expiry. Basically, आपसे 100 रुपये ले लिया, आपको बोला 10 साल तक आपका ये बॉन्ड हमारे पास पैसा रहेगा, आपको 10 साल बाद हम चुका देंगे. तो वो लोग इस तरह से करते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल है, मतलब सिर्फ 100 रुपये लिया है तो 100 तो आपको चुकाना है. आज उसका कुछ अमाउंट वो लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे जो आज से 10 साल बाद जाके 100 रुपये हो जाए. तो आपको तो 100 रुपये चुका देंगे, और बाकी जो अमाउंट है वो लोग अपने बिजनेस में, दूसरे प्रोडक्ट्स में, इक्विटी में यूज़ करके उस पर हायर रिटर्न जनरेट करने को ट्राई करेंगे. Although there is marketed as a debt paper, it is similar to have a fixed income security. It is a synthetic product constructed by financial engineering, that is a combination of the debt and the derivative structure. Risk-averse investors get an opportunity to invest in products with possibility of higher returns, while at the same time the downside is protected. It must be clearly understood that the principal protection does not mean the absence of credit risk. Investors in the PPN are exposed to credit risk for the issuer. Several NBFCs have issued PPNs, that is the equity-linked bonds, commodity-linked bonds, and etc. Now, inflation-protected security, basically the debt instrument of them being the fixed income product run on the risk of delivering negative or real returns during the high inflation periods. And the investors, the debt papers are retired old persons who do not have other source of income. For such cases, it is important to have a return beating inflations. IIB, that is inflation indexed bonds, category government securities issued by the RBI which provide inflation protection return to the investors. In India, inflation index bonds have been launched with the both principal and interest are adjusted for inflations. These bonds have a fixed real coupon rate which is applied to the inflation adjustment principal on the each interest payment date. On maturity, the higher the face value of the inflation adjusted principal is paid out to the investors. Coupon income as well as the principal is adjusted for the inflation. This inflation adjustments on the principal is done by multiplying with the index ratio. The index ratio is called by dividing the reference index on the settlement date by the reference on the date of the issue security. The wholesale price index is the inflation measure that is considered for the calculations. Another category of the inflation index instrument issued by the RBI for retail investors, the inflation index national savings securities cumulative to 2013. These bonds of the 10-year tenor are available to the retail, resident, individual, minor, HUF and the charities. The bond carries a fixed interest rate of 1.5% and an inflation rate calculated on the basis of the CPI. The interest is compounded every 6 months and accumulated, and the same is payable with the principal on maturity. The fixed vendor is a floor and is payable even there is a deflation. The interest is taxable according to the tax status of the investors. Now, basically, these are a few questions after third chapter. Okay, now the first question is: a bond is issued at a face value of 100, a coupon of 10%. The interest rates in the market have increased. The bond is likely to be quoted at. ऑब्वियस आंसर है, अगर आपको कूपन 10% दे दिया है और 100 रुपये का फेस वैल्यू है, अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं मार्केट में इंक्रीज हो रहे हैं, इंटरेस्ट इंक्रीजेस, price decreases, therefore at a price below the face value. The dash for equity share is the discounted value of the future benefit, intrinsic value. Calculate the enterprise value, simple बात एकदम, मार्केट कैप को ऐड करना, मार्केट वैल्यू डेट को ऐड करना, कैश को निकालना. मार्केट कैप कितना 10, डेट कितना 3, 10 3 13, कैश कितना 4, 13 में से 4 निकाला 9 लाख. Bond which have the embedded call option in them are known as the callable. Simple, embedded call option, the callable, embedded put option, then
पुटेबल। सो गाइज ये आपका थर्ड चैप्टर यहाँ खत्म होता है। वील बी राइट बैक इन सम टाइम विद द फोर्थ चैप्टर। थर्ड चैप्टर को मास्टर करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपका राइटिंग प्रैक्टिस रखना, आपके क्वेश्चन आंसर्स के NISM के थ्रू आप प्रैक्टिस रखना, क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, तो जिससे मोर एंड मोर वीडियोज मैं फास्ट देता रहूँ। गुड लक, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।